Hey, easy day. Why? Because I think probably shared this particular move around 400, 500 point move in Bank Nifty in the morning. So let's look at what I did. In the morning around 10 o'clock, I said Bank Nifty makes a new low. Once Bank Nifty makes a new low, I look for a buying opportunity after 11 near lows. This was a group I shared in the chat and on TradingView. So this I shared around this price where Bank Nifty did not make a new low. So once it made, I think around 10, 12, I was looking for buy only, buy after 11. So this was my buying opportunity. It closed below VWAP and then again it closed above 20 MA. My stop loss was day low. My first target was I wanted to book some here highs, which I did. And the only thing here was it was still roaming around uh, between yesterday's highs, the selling where the selling came. So that was probably the only concern. But because I booked 70% here, I was okay, and I moved my stop loss to this low. So these are higher lows. So once that was done, I booked around 1 o'clock. Not much difference from 12 o'clock. I think 40, 50 points difference, and booked out my profits. Now I gave a trade on Nifty on TradingView as well, but that did not trigger. What was the trade? 145 if is till 145 if high is not broken. I look for a buy opportunity above 145. The high was broken, so this did not trigger. This was a reference. If the high does not break, you buy above 145 and gives you a good move. At least it gives you a move to you can book some profits here and then trail. So which did not happen, but eventually if you see, uh, there was some reversal towards VWAP, and then it did go towards the bullish side or towards the high. So yeah, to conclude, Nifty did not trigger, so did not trade anything else. Bank Nifty, I gave this trade in the morning around 10 o'clock, and I played this. So yeah, made some money here. Not trading positionally till probably next Monday, and then I'll see what is happening. तो बैंक निफ्टी 3 मिनट देखते हैं। शांत दिन था, मैंने ये पूरा मूव पकड़ दिया था, और 11 बजे के बाद जो बुलिशनेस आई है ट्रेडिंग व्यू पे, अगर आप देखेंगे इसको, तो मैंने यहाँ पर ये चैट पे ये लिखा था, वंस बैंक निफ्टी मेक्स न्यू लो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 11 ईयर लोज। तो ये ग्रुप का नाम है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मैंने भेजा था 10 बजे के आसपास, और तब उसने फिर लो बनाया। जैसे लो बनाया तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है 11 o'clock के बाद। मेरी अपॉर्चुनिटी ये थी। अ, इसमें मैंने वेट किया, इसको भी आपके नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद मैंने वेट किया 20 MA के ऊपर क्लोज होने का। जैसे ही क्लोज हुआ, मैंने बाय किया इसको। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही था कि ये अभी भी इस सबसेट के अंदर है जहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर आया था कल। तो अ, इसलिए मैं चाहता था यहाँ पे थोड़ा बुक कर दूँ। 70% शायद मैंने बुक कर दिया था हाई के आसपास। बाकी 30%, 20-30% जो बचे थे, वो मैंने 1 o'clock के आसपास बुक कर दिया था, क्योंकि मुझे निफ्टी में ट्रेड लेना था। तो निफ्टी में मेरा ट्रेड आया था जो मैंने दिया था ट्रेडिंग व्यू पे, जो ट्रिगर नहीं हुआ। ट्रेड था कि 145 के ऊपर मैं बाय करूँगा, अगर ये हाई नहीं टूटता तब तक। ये हाई टूट गया, इसलिए ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये रेफरेंस है इसका, 145 के यहाँ पे हाई नहीं टूटा है, और ये तो इसलिए ये निफ्टी ट्रेड नहीं किया मैंने। और बैंक निफ्टी में जो मैंने पैसे कमाए थे सुबह, वो शायद 400 पॉइंट थे, 300-400 पॉइंट थे फ्यूचर में। तो बस वही था आज का ट्रेड मेरा। और ये पोजिशनली मैं कर नहीं रहा ट्रेड। कल बजट है, और शायद मंडे तक मैं नहीं करूँगा। मंडे के बाद मैं डिसाइड करता हूँ क्या करने वाला है ये, या कोई वॉल्यूम आई मंडे के बाद तो फिर मैं डिसाइड करूँगा। अभी तो मुझे नहीं करना ट्रेड इसमें। थैंक यू।